Bismillahirrahmanirrahim. Grade 8, welcome to physics class. I am engineer Wasib Naseer, and today we are going to solve example number 2.3. As in the previous video, we have done the examples which are related to the topic speed and velocity. But here, these are the examples which are related with the topic of acceleration. Okay. Before seeing the video, you will open the page number 42 on your book. If you have that, on page number 42 you will see that there is an example. You have to read the statement. You observe that your car accelerate from rest to 140 km per hour. He is saying that आपके पास एक गाड़ी है जो कि पहले रेस्ट में थी और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 140 किलोमीटर पर आवर आ रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 140 किलोमीटर पर आवर है. Before going to the next step, first of all I will convert it to the meter per second, because you know that the SI unit of velocity is meter per second. So this is 140. I will put 1000 in the place of kilometer as it is, and you know that there are 3600 second in 1 hour. That you know that 1 hour it is equal to 3600 second. So in place of hour I will put 3600 second. Okay. Now I will tell you that it is equal to change in velocity. It is equal to 20 से cancel हो गए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. It will be 38.88 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है. आगे स्टेटमेंट इन जस्ट 17.6 सेकंड दैट द चेंज इन टाइम. उसने जो टाइम इस चीज में लिया है दैट इज 17.6 सेकंड ऑन द स्ट्रेट रोड टुवर्ड ईस्ट. What is the acceleration of your car? I have to find the acceleration. So you will write the heading to find, and you will write acceleration is equal to unknowns. So what is the solution for this? As I told you that acceleration is the change in velocity per unit time. You all know the formula del v by del t. ये हमने acceleration वाली वीडियो में आपने देखा था, उस टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था. So acceleration, the change in velocity is 38.88. I will not put the unit right now. 17.6. और जब आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे you will get 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 2.2, this is the answer, and meter per second square it is the unit of acceleration. Okay, so it is very simple example. इस एग्जांपल में आपको चेंज इन वेलोसिटी गिवन थी, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है. ओके, नाउ आई विल गो फॉर द assignment number 2.3. This is the assignment 2.3. In assignment 2.3, write on the page number 42 and beneath the example 2.3. If in a same experiment you take the reading of speedometer of car as 20 km per hour in 4 seconds and 32 km per hour in 9 seconds, what is the acceleration? Okay, इसमें आपको जो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अब आपने मेरी बात बहुत गौर से समझनी है. गिवन में उसने जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है कुछ देर बाद जब आपने टाइम नोट किया दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो और जो चेंज इन टाइम है, ठीक है, दैट इज डेल टी. It is t2 minus t1. You can see on your statement that it is written that he has noted the time at 4 seconds and also he has wrote the time in 9 seconds. So the final time is 9 seconds and initial time is 4 seconds. So the answer will be 5 seconds. Okay, the change in time interval is that this. And what is the change in velocity? 32 minus 20, 12 kilometer per hour. This is the change in velocity. Because before going to the next step, first of all I will convert it kilometer per hour into meter per second. How? I will put 1000 in place of kilo. As you know that 1 kilo is equal to 10 power 3.
and I have told you that 1 hour is equal to 3600 second. So 3600 I will put in place of hour. ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 ones are 12 threes are, ठीक है. It is about 10 divided by 3. आप यहाँ से देख सकते हैं एक 10 है divided by 3. 10 divided by 3 जब आप करेंगे it is almost 3.33 यूनिट हम पुट कर देंगे मीटर पर सेकेंड. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी हो गई है. इसके बाद आपने ऐसे करना है कि उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है. तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे, टू फाइंड के हेडिंग दोगे और उसमें आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अननोन. ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अननोन. नाउ आपको सेम उसी की तरह एक्सेलरेशन की फार्मूला यूज करोगे, del v by del t. You know that change in velocity is 3.33 second divided by 5. So you will calculate the acceleration. 3.3 divided by 5, it is almost 0.66 meter per second square. This is the value of acceleration. Okay, so these are the two examples which are related to our topic of acceleration. Okay student, there are some other examples which are just like that. You have to solve these example by yourself. I will just give you a hint related to that example. The first example, you can say that a car goes to 18 meter per second to 38 meter per second in just 10 seconds. Find the value of acceleration. एक गाड़ी थी जिसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड थी और वो चेंज होके जो है ना वो 38 मीटर पर सेकंड चली गई है और चेंज होने में जो टाइम उसका लगा है दैट इज 10 सेकंड. ठीक है, ये और ये आपके पास वैल्यूज हैं इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की और टाइम की. ओके, आपने डेल v फाइंड करोगे, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और जिस तरह भी हमने पिछले एग्जांपल में किया है और एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट करोगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बाय अप्लाइंग ब्रेक अ मैन स्टॉप अ बाइक फ्रॉम 60 मीटर पर सेकंड टू रेस्ट बाय फाइंड एक्सेलरेशन. ठीक है, एक आदमी जो गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो गाड़ी चलाते वक्त उसकी जो स्पीड थी या बाइक की जो स्पीड थी दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड गोस टू रेस्ट in 15 सेकंड. ओके, दिस इज द टाइम पीरियड. ये आपको टाइम गिवन है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यू कैन सी दैट इज रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी रेस्ट का मतलब ये है कि इट इज 0. ठीक है, और टाइम पीरियड आपको गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड गिवन है, आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और फिर उस वैल्यू से आपने ये बताना है हमें आया कि ये एक्सेलरेशन था डी एक्सेलरेशन. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये आपके पास डी एक्सेलरेशन होगा और इसकी निशानी है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा. जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी. नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. तो आपने हमें बताना है कि ये जो वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये एक्सेलरेशन की थी या ये डी एक्सेलरेशन की. ठीक है, ऑल्सो यू विल सॉल्व दिस एग्जांपल बाय योरसेल्फ. इससे पहले भी 2 एग्जांपल हमने किए हैं वो भी इसी तरह थी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.